Today we are going to solve one of the equation f of x is equal to 0 with the help of two methods, secant method and Regula Falsi method, which was discussed in earlier video. So let's start with the question. Here it is given that we have to find a real root of the equation f of x is equals to x cube minus f of x is plus 1 equals to 0, which lies in the interval 0 1, the open interval 0 1. We have to perform 4 iterations of the secant method and Regula Falsi method to obtain this root. Now we have given 0 and 1, so let's take x naught is equals to 0 and x1 is equals to 1. We took here x naught is equals to 0 and x1 is equals to 1. Now we have to find the value of function at x naught is equals to 0. We know that how to find the function's value. If we substitute 0 at the place of x in the equation, we get the value of the function 1. Here just substitute the value of x 0 and we get function की value at x is equals to 0, or for this 1 we substitute 1 का cube 5 1 plus 1 which is minus 3. Okay, so we got the values, and we see here that both are with opposite signs. Function at 0 is 1, which is positive. The function at 1 is minus 3, which is negative. Let's start with the secant method. As we have already seen the formula, xk plus 1 is equals to xk minus xk minus 1 over function at xk minus f function at xk minus 1 function at xk. Okay, so if we are going to take k is equals to 1, then x2 we got the value of x2 and x1 minus f of यहाँ पे आ गया x1, यहाँ पे we get x1 because we have taken k is equals to 1. So x1 minus x0. Just substitute the values at their respective places. x1 is 1, x1 is 1, x0 is 0, f of x1 is minus 3, f of 0 is 1 here and here, and multiply by f of 1, and f of 1 is minus 3, which gives this solution. After substituting we get 0.25. Okay, then we have to find the value of the function, the value of this function at 0.25. So substituting this 0.25 का cube minus 5 0.25 1 is equals to minus 0.234375. So we get the value at f of x2, that is f of 0.25 as a negative. But in secant method it doesn't matter whether the next approximation is positive or negative. We have to take this one for the next iteration or approximation. Now our next iteration is for x3, as we have directed that we have to take or perform 4 iterations for each method. So next iteration is x3, which is equal to x2 minus x1, f2 minus f1, f2. Substitute the respective values. x2 पे 0.25, x2 0.25, x1 is 1,
minus 0.234375, which we have calculated for f of x2, minus 3, and this one. After calculating, we get the value x3. Then we have to calculate the value of the function at x3 from the formula x3 minus 5x3 plus 1 equals to 0. Okay. After calculating this one for x3, we get this value. Again, using these two values in the next approximation x4, x3 minus x2 over f3 minus f2 into f3, we get value x4 is equals to this one. After solving this, we get x4 is equals to this and f4 is equals to this. Then x5 is x4 minus x3 divided by f4 minus f3 whole multiplied by f4 is equals to 0.201640. This solution is from secant method. As we have got the value of the function and the fourth iteration from secant method, now we make use of Regula Falsi method, where one condition occurs where we have to check this condition and take those two values which give the product of functions at these values negative. ओके, जैसे कि हमने रेगुलर फॉल्सी के बेसिक मेथड में सीखा था। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे। x नॉट इज इक्वल टू 0, एफ फंक्शन एट x नॉट इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू -3. देन वी कैलकुलेट द फर्स्ट इटरेशन x2 which is equal to x1 minus x naught f1 minus f naught into f1 which is equal to 0.25. सेम वैल्यू सेम इटरेशन, फर्स्ट आपके पास सेम वैल्यूज देंगे, चाहे वो सीकेंट हो चाहे वो रेगुलर फॉल्सी मेथड हो। तो f2 हमारे पास आ गया फंक्शन एट x2 और वैल्यू हमने कैलकुलेट की। दिस विल रिमेन सेम एज इन द केस ऑफ सेकेंड मेथड। अब हमने चूज करना है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब हमने जब चेक किया फंक्शन की वैल्यू x नॉट पे 1 है और x1 पे -3, इसका मतलब नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मतलब जो आपका ग्राफ है इट्स लाइक फंक्शन इज लाइक दिस। x नॉट पे फंक्शन की वैल्यू ये x नॉट हो गया, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और यहाँ कहीं x1 है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, ये x1 हो गया। ठीक है जी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आई है वो आई है x2 जो कि 0.25 है, जिस पे फंक्शन की वैल्यू अगेन नेगेटिव, मीन्स x2 इज लाइक दिस। यहाँ कहीं x2 आपके पास आ जाता है, ये x2 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू अगेन x2 नेगेटिव आई है। Now we know that negative multiplied by negative is positive and positive multiplied by negative is negative. तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में से कौन सा x नॉट की फंक्शन या x1 की फंक्शन पे वैल्यू मल्टीप्लाई की जाए जिससे कि ये प्रोडक्ट आपके पास नेगेटिव आए। तो x2 के साथ जब हम देखेंगे इस वाले को नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ हमें कोई पॉजिटिव वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए हमने x नॉट लिया। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके साथ नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते देन इट विल गिव अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो इसके लिए हमने क्या किया, x नॉट की वैल्यू ले ली 0 और फंक्शन की वैल्यू x नॉट पे पॉजिटिव वैल्यू देता है। देयरफॉर वी टुक द वैल्यू x2 0.25 and x naught 1 for the next approximation, and therefore x3 is equals to x2 minus x naught f2 minus f naught f2,
and after calculating all these things we get the value x3 0.202532 and फंक्शन की वैल्यू मोर नियरर टू 0. ठीक है, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि इट इज़ द रूट. नियर टू द रूट इज द नियर टू द 0 ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन x. अब ये अगेन नेगेटिव आया है. फंक्शन x3 की वैल्यू है 0.202532 एंड फंक्शन की वैल्यू एट x3 है नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब इट इज़ अगेन फ्रॉम द लोअर साइड. यहाँ कहीं x3 है तो अगेन हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन किसके पास जाएगी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आता है. तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी x0 पे, और अभी रिसेंट वैल्यू जो आई है फंक्शन की जो कि नेगेटिव है, नियर टू द 0 है, वो है ये x3 पे. देयरफॉर वी विल टेक अगेन दिस प्रोडक्ट and check it as a negative quantity. So therefore for the next approximation, that is for x4, we make use of this x3. Okay, x3 minus x0, f3 minus f0, f3 which is 0.201654. फंक्शन की वैल्यू x4 पे क्या आ रही है, -0.0070, more nearer to 0. Therefore we take x4, ये भी नेगेटिव है. अगेन we take the product and again the product किसके साथ आएगा, x0 के साथ, और x4 की फंक्शंस की वैल्यूज आपस में अगेन नेगेटिव रहेगा. और जो आपका एरर है वो एरर लाइज बिटवीन x0 and x4. This error is known as asymptotic error constant. Therefore, our fourth approximation is x5 is equals to x4 minus x0 over f4 minus f0 into f4, which is equal to 0.201640. Okay, almost same result as in the case of secant method. Both secant method and Regula Falsi method have their convergence. Secant method, the order of convergence is 1.618, and for Regula Falsi method the order of convergence is 1, or we say the Regula Falsi method has linear rate of convergence. Thank you.